गाइस व्हाट्सअप, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई कौशल और आप देख रहे हैं गोरखा रिएक्शन चैनल। शो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कुछ सजेशन है तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट पे कर सकते हैं। सो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो रिएक्ट किया था आपके साथ में बैठ के। आज फिर और एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ बैठ के देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ अंत तक देखिए और अपना राय दीजिए। हम बात कर रहे हैं एक खूबसूरत देश बांग्लादेश की, जो वहाँ पे अभी प्रोजेक्ट हो रहा है जो रेल का। टाइटल पे जाते हैं बिना किसी देर के, ढाका चिटोंग चौक्स बाजार रेलवे लिंक। इसके ऊपर 3D वीडियो है। दिखते हैं, उसके बाद देते हैं अपने मन की बात। देखते हैं बिना किसी देर के, स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1। ये एक बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट। Bangladesh is a dynamic, rapidly developing country and the capital city, Dhaka, is linked to the major port city Chittagong by rail. The railway extends south from Chittagong to Dhaka, approximately 46 kilometers away. The country's premier tourist destination, Cox's Bazar, with the world's longest stretch of uninterrupted beach, is located about 150 kilometers south of Chittagong. There are many tourist attractions nearby, including Ramu Pagoda, St. Martin Island, beautiful destinations such as Nilgiri, Malachhol and Golden Temple in Bandarban. Bangladesh's rapid economic growth and rising standards of living highlight the need for better connectivity to this premier tourist destination. Good infrastructure connectivity is a prerequisite for further economic development. At present, the principal means of travel from Dhaka to Cox's Bazar is by car or bus, along congested roads. The trip to Cox's Bazar is a long and dangerous one, with a high accident rate. Bangladesh has one of the highest fatality rates in road crashes, higher than 73 deaths per 10,000 registered motor vehicles every year. There is a clear need for a safe, speedy, economical, comfortable, convenient means of travel between Dhaka and Cox's Bazar. A new dual-gauge railway is planned to link Dhaka to Chittagong, onto Dhaka and Cox's Bazar and Ramu to Gandum near the Myanmar border. The trains will be able to travel from Dhaka via the Dhaka-Chittagong Express Railway, onto Chittagong and Cox's Bazar in 5 hours, compared to the current 12 hours by car or bus. This single-line dual-gauge has provision for double line in the future. Local trains will also be provided, stopping at new stations to be provided at Dhaka, Satkania, Lohagara, Harbang, Charkaria, Dilohazara, Islamabad, Ramu, as well as at Cox's Bazar. The planned expansion of the Bangladesh rail network, with linkages to the Padma rail link via the Dhaka-Chittagong Express Railway project, will permit double-stacked containers to and from Chittagong and the future deep-sea port at Meshkali, and permitting much faster travel times between Dhaka and Cox's Bazar. Emphasis will be on the broad-gauge network, and regional and sub-regional connectivity, including the SARC and Trans-Asian railway corridors, with linkages to India, Myanmar, China and other countries. The new railway from Dhaka to Cox's Bazar will permit a future connection to the proposed deep-sea port at Meshkali, with potential freight to be handled to and from the deep-sea port.
The railway will also provide for a future link from Ranmu to Ukiah and Gandum on the Myanmar border, with future connections to Myanmar, other ASEAN countries and the Trans-Asian Railway. This linkage will enable the introduction of tourist passenger trains, offering a high level of service, convenience and comfort. The trains will be able to travel from Dhaka via the Dhaka-Chittagong Express Railway, onto Chittagong and Cox's Bazar in 5 hours, compared to the current 12 hours by car or bus. The trains will be air-conditioned, with reclining seats, on-board entertainment and an on-board trolley service. The rail journey will form part of an integrated tourist experience. The trains will have external advertising, and will serve as traveling billboards, with an exposure to millions of people along the Dhaka-Chittagong-Cox's Bazar rail corridor. The Dhaka-Cox's Bazar trains will run as express trains, stopping only at Chittagong and Cox's Bazar. The Cox's Bazar rail terminal is designed to enhance the tourist experience, with an iconic building proposed in the form of a clamshell, in keeping with the marine environment of Cox's Bazar. Around the Cox's Bazar intermodal terminal there will be complementary development, including transport terminals, tourism-related developments, hotels, commercial and high-rise residential developments. Passengers arriving at Cox's Bazar will be provided with convenient seamless transfers at the Cox's Bazar station, to cars, buses and other forms of transport to their final destinations. Social and environmental safeguards have been suitably addressed through investigations, extensive stakeholder consultations and development of appropriate mitigation measures. The project is being implemented at a capital cost of around $1.5 billion, and approval in principle for funding has been received from the Asian Development Bank. The new railway from Dhaka to Cox's Bazar and Ranmu to Gandum will provide many benefits to the local region and the nation, including permitting the arrival of over 26,000 passengers per day to Cox's Bazar, improving the connectivity between Dhaka, Chittagong and Cox's Bazar, providing increased mobility options for passengers, providing a safe, secure, speedy, convenient, comfortable, economic, sustainable and reliable transport link for tourists and the general public, providing employment opportunities for local communities during the construction, operations and maintenance phases, providing a catalyst for establishment of a future deep-sea port at Meshkali, boosting the economic development of the region from Dhaka to Cox's Bazar and to Teknaf, providing a vital transport infrastructure link to connect with Myanmar to facilitate sub-regional and regional trade. Construction of this line is equivalent to 0.5% of GDP. सो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म और जाते अपनी बात की तरफ। सो बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट था, उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द बन के ठीक हो जाए। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? सो जल्द से जल्द बन के ठीक हो जाए, उम्मीद करता हूँ सबको ये
इसने एक तो देश की जीडीपी पे बहुत सारी ग्रोथ लाएगी, उसके बाद तो क्या ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे इजी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि बस में जाने से 12 से 14 घंटा लगते हैं, तो ट्रेन में जाएंगे तो कम से कम उसका आधा तो नहीं, तकरीबन अगर 13 घंटे के हिसाब से देखे जाए तो 7-8 घंटे में तो ऑब्वियसली ट्रेन पे पहुंच जाएंगे। हालांकि ये ट्रेन लोकल ट्रेन नहीं है, ये विद एसी टायर वाला ट्रेन है, विद इंटरनेशनल सर्विस भी देती है। सो बहुत ही अच्छी बात है, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जो कदम चाली है मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। सो इससे फ़ायदा क्या होगा, इसमें अभी यहाँ पे बताया गया है कि एक बंदरगाह बनेगा, सो सी पोर्ट बनेगा, उसमें बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फैसिलिटी हो जाएगी। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि रोड वे में ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है पर ईयर 10,000 से ऊपर। सो इसमें बहुत ही रिस्की होता है, हालांकि किसी भी देश में ऐसा ना हो, लेकिन क्या करें होते ही है। सो ये कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेन पे सफ़र करने को जाएंगे, तो इससे हिसाब से ट्रैवल बस ट्रैवल में कम होगा, तो इसीलिए ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होता है। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट है इसमें, रीजनल और इंटरनेशनल, और पब्लिक को भी बहुत बेनिफिट है, जैसे कि बहुत सारे नौकरियां मिल जाती है। इसका प्रोजेक्ट का कितना 45 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर बताया गया है कि बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे जगह को इसने कवर करने का है। जो बहुत सारे जगह को कवर करेंगे तो बहुत सारी नौकरियां मिल जाएंगी। सो बहुत कुछ ध्यान पे रख के बनाया है, जैसे कि नेशनली रीजनली नहीं, उसने इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को भी देख के बनाया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। सो यहाँ पे बताया गया है कि चिटोंग टू चॉक्सेस बाज़ार तक के अंदर जितना भी सिटी आती है उस सबको कनेक्टिविटी करके जाती है। जैसे कि ट्रेन भी लोकल ट्रेन है, जैसे कि एसी टायर वाला ट्रेन है। सो बहुत ही सेफ्ट एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनाया होगा। सो उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द बन के ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाए। सो अपने देश की चीज़ जैसे बन के वो होती है, थोड़ा सा बोलने में भी बहुत शान फ़ख्र महसूस होती है। सो बिग कंग्रेचुलेशन टू होल ऑफ द कंट्री पीपल फॉर बांग्लादेश। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेगा। आने वाले दिन में भी ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आपके साथ में हाजिर रहूँगा, आपका भाई। सो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।